Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening, everybody. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Yes, write in the comment box yes. Sound आ रहा है मेरा properly तो yes लिखिए so that I can start. So I hope I am audible to you. Today we are going to start a new chapter, that is a nervous system. So we'll discuss about the anatomy physiology of nervous system. Nervous system. Okay. So once you understand this nervous system, you can understand the drug acting on CNS from pharmacology and drug acting on ANS in the pharmacology. So first of all, you have to understood this nervous system from anatomy physiology point of view, so that you can understand this drug acting on CNS and drug acting on ANS. So in the drug acting on CNS, you have 5 to 6 chapters. In the drug acting on ANS, you have 5 chapters, right? So once you understood this nervous system from HAP point of view, so you can understand these chapters from pharmacology point of view. After that, we will discuss their chemistry. Whatever pharmacology chapters we have discussed yet, so that is nothing but the anti-cancer drugs. After that, we have seen the coagulant, anticoagulant, thrombolytics. After that, we have seen the diabetes. After that, we have seen the hypolipidemics. Now all the chapters from chemistry point of view, medicinal chemistry point of view, are remaining, because in those chapters there are only few things that can be asked from medicinal chemistry point of view. So some kind of drugs have SAR part, otherwise just you need a structure, then IPAC name, and probably synthesis. That's it. That's why I was not taken that part, but I will take that, don't worry. So today we'll see the nervous system. Dhanasri Kendra. Okay, so nervous system, basically it is one of the system in the body. Nervous system is the one of the system in the body, so which coordinate with the internal and external environment, so maintains the normal environment. So nervous system is the system which coordinates with the external and internal environment. So what do you mean by external environment? आपके बॉडी में external environment होता है और आपके बॉडी के अंदर internal environment होता है. What do you mean by external environment and internal environment? Nervous system is a system which coordinate with the external changes that takes place outside the body, that is recognized, and that message is sent to your brain. Okay. Internal environment means if any changes are there in the internal environment to regulate, let's say for example to regulate your blood pressure, so changes in the pressure at artery, that is taken as one of the stimulus. Changes in the pH of blood, that is taken as one of the stimulus. So that is known as a, okay, nervous system will coordinate, will get signal from internal environment and also from external environment. So what do you mean by external environment? Say for example आपको अगर है ना, आपको अगर हीट महसूस होता है, अगर आपको गर्म लगता है, या फिर आपको है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फीलिंग ऑफ वार्म, टच, है ना, पेन, so pain, touch, sensation, different senses, so that is a external environment. Suppose you have tiger in front of you, अगर आपके सामने टाइगर आता है तो आपको इमीडिएटली उसका सेंस आपके आईज रिकग्नाइज करते हैं, सो दैट इज एक्सटर्नल
environment. So what is the role of nervous system? So role of nervous system is nothing but the to coordinate with the internal and external environment, right? So right now there are different functions of nervous system. There are a lot of functions. If you want to go and read from reference books, there are functions are given over there. I'm not going to go in the detail of the functions. So basically the important function is nothing but the to protect yourself, okay, obviously. So nervous system is one of the complex system of your body which coordinate with the external and internal environment. So it recognizes the changes taking place in the internal as well as external environment, so that it has an influence, it can correct, right? Now so you can say a system which makes you nervous, okay, nervous system. So nervous system consists of a different type of organs. तो सिस्टम मतलब अपने देखा है ये हायरार्की. फर्स्ट क्या होता है? सेल. सेल के बाद में क्या होता है? ऑर्गन्स. सेल के बाद में क्या होता है? टिश्यू. सेल, टिश्यू, then organs and then system. We have seen so organs and system. Cell means it is a unit, okay, it is a structural and functional unit of life. So collection of cell together to perform a particular work known as a tissue. Collection of tissue to perform a particular task known as a organs, and collection of organs which works together to perform a particular function known as a system. Right? So cell for the nervous system is a nervous cell or neuron. So neuron is the structural and functional unit of your nervous system. Neuron is a structural and functional unit of your nervous system. So collection of neuron, you will become a nerve. You will get a nerve. And tissue मतलब क्या? nerve आएगा. Nerve bundle, right? Nerve bundle. And organs means, say for example, spinal cord is one of the organ. Then cerebellum is one of the organ. Your brain is one of the organ, right? Brain. Say for example, brain and spinal cord. And when these organs come together to perform a specific function, you will become a nervous system. So that is a hierarchy level of your ना सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है आपका ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है आपका सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ टू, राइट? नर्वस सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स. नर्वस सिस्टम में 3 एलिमेंट्स होता है. नर्वस सिस्टम हैज अ 3 एलिमेंट्स. फर्स्ट वन इज योर ब्रेन. फर्स्ट वन इज योर ब्रेन. Then spinal cord, and nerves and peripheral nerves. So your nervous system consists of 3 elements: brain, then spinal cord, and then nerves, peripheral nerves. So nervous system mainly consists of a brain, spinal cord, and peripheral nerves, right? So brain and spinal cord, they are known as a CNS. Brain and spinal cord together, they are known as the central nervous system. Basically nervous system has a 2 part. So your nervous system consists of a 2 part. First part is known as a central nervous system and second part is known as a peripheral nervous system. Okay, so central nervous system में क्या आता है आपका? In the central nervous system you have brain and spinal cord. So let's see the parts of nervous system. In the nervous system you are going to have brain. So in the brain में क्या क्या आता है? So in the brain you have cerebrum, which is the largest part of your brain. Cerebrum, the cerebellum, है ना? It is known as a major brain. इसको अपन major brain बोलते हैं. And then cerebellum, it is known as a minor brain. Then midbrain is there. Pons variola is there. Medulla oblongata is there. So these are the parts of your brain overall. So brain is a highly important tissue. So brain controls the overall activities of your body along with your endocrine system. So brain controls your body. आपके बॉडी का कंट्रोल किसके हाथ में है? ब्रेन के हाथ में.
along with the endocrine system. So endocrine system में जो hormones release होते हैं, so along with the endocrine system your brain works, your brain control the almost all activities of your body. So right from the connection with the external environment and as well as internal environment, है ना. तो आपका जो इंटरनल बॉडी का एनवायरनमेंट है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देना. तो ब्रेन वर्क्स टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ एक्शंस ऑफ ब्रेन. फर्स्ट एक्शन इज इमीडिएट एक्शन. तो पहला होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स और क्विक एक्शन. पहला क्या है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स और क्विक एक्शन. एंड दूसरा होता है डिलेड एक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल, सो ब्रेन इटसेल्फ विल गिव सिग्नल. जैसे मान लीजिए, है ना, आपको फटक से, आपने अगर गलती से गर्म तवे पे हाथ रख दिया तो फटक से आपका हाथ विड्रॉ हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ब्रेन ओनली. सो ब्रेन gives immediate motor response known as the immediate action of brain, and some action of brains are delayed due to the control of your hormonal system or endocrine system. So brain along with the endocrine system will work and that action will take time. So delayed action. So brain will have two action, immediate and delayed, right? Now brain के part क्या है? cerebrum, that is known as the largest part of brain. Then cerebellum, small brain or hindbrain, pons, medulla oblongata, etc., etc. Then spinal cord. In the spinal cord you have three segments. In the spinal cord, cervical segment. So जो cervical segment है वहाँ से कुछ nerves आएंगे, cervical nerves. In the thoracic segment, some nerves will be nerve will come. One of the thoracic nerves, lumbar segment is there, sacral segment is there, and coccygeal segment is there. So brain and spinal cord together they are known as the CNS, central nervous system. Brain and spinal cord together known as the central nervous system, CNS, right? And another nervous system is there known as the peripheral nervous system, which consists of your nerves. तो CNS में क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है CNS में. दोनों को टुगेदर बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, और बाद में आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और PNS. उसमें क्या रहेगा? उसमें नर्व्स रहेंगे, राइट? उसमें सोमैटिक नर्व्स एंड एटोनॉमिक नर्व्स हैं. तो CNS एंड PNS यू कैन सी ओवर हियर. सो ब्रेन is divided into different segments. Brain is divided into different segments. So first one is known as a forebrain or prosencephalon. इसके synonyms याद रखना है, क्वेश्चन आता है. Brain is divided into different type, mainly three categories. Brain is divided into three major parts. Brain has three major parts. First part is known as a forebrain or also known as a prosencephalon. प्रोसेंसेफेलॉन और फोरब्रेन, इसके सिनोनिम याद रखना है, क्वेश्चन आता है. देन मेसेंसेफेलॉन आल्सो नोन एज अ मिड ब्रेन एंड रोम्बेनसेफेलॉन इज नोन एज अ हिंड ब्रेन और सेरेबेलम. सो ब्रेन हैज अ थ्री मेजर पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज अ प्रोसेंसेफेलॉन और फोरब्रेन, सेकंड पार्ट इज अ मेसेंसेफेलॉन और मिड ब्रेन, एंड थर्ड पार्ट इज अ रोम्बेनसेफेलॉन और हिंड ब्रेन. तो प्रोसेंसेफेलॉन और फोरब्रेन is again divided into two type. First one is the telencephalon and second one is the diencephalon. Telencephalon में क्या आता है? In the telencephalon you have cerebral hemisphere. There are two hemisphere in the cerebrum, right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. आपके ब्रेन जो सबसे बड़ा पार्ट होता है cerebrum, वो दो पार्ट में होता है, आधा आधा सर्कल है ना, like your moon. तो that's half circle, that's why hemisphere. Cerebral hemisphere right and left. Then basal ganglia, hippocampus, amygdaloid nucleus. तो telencephalon के parts है. Telencephalon has a cerebral hemisphere, basal ganglia, hippocampus and
amygdaloid nucleus. So these comes under the telencephalon. Now diencephalon में क्या क्या आता है? diencephalon में आता है thymus, diencephalon में आता है thalamus, hypothalamus, then metathalamus and subthalamus. मतलब thalamus जो आता है वो that is a diencephalon. In the prosencephalon, that is forebrain, you have telencephalon, diencephalon. Telencephalon में क्या आता है? cerebral hemisphere, basal ganglia, hippocampus, amygdaloid nucleus. diencephalon में आता है thalamus, मतलब thalamus, hypothalamus, metathalamus, subthalamus. All these are the part of thalamus. Then midbrain, that is known as a mesencephalon, and rhombencephalon is known as a hindbrain. hindbrain. इसमें hindbrain में दो टाइप आता है. metencephalon, in that metencephalon you have pons spheruli and cerebellum, and in the myelencephalon you have medulla oblongata. So these are the parts of brain, right? Individual we will see the functions and all that, don't worry. So nervous system basically classified into two type. आपका जो nervous system है, nervous system is classified or categorized into two type. फर्स्ट कैटेगरी होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सीएनएस, राइट? सीएनएस. सो नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप. नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप. सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच इज हैविंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. फिर सीएनएस में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो इन द सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम known as a PNS, peripheral nervous system known as a PNS. In that you have somatic nerves and autonomic nerves. You have somatic nerve or somatic nervous system and autonomic nervous system. So what do you mean by somatic nervous system? Somatic nervous system को किसको बोलेंगे अपन? Somatic nervous system मतलब under the voluntary control. Okay, so this is under voluntary control. And what do you mean by autonomic nervous system? Which is under involuntary. This is a not voluntary control, it is involuntary. Na? Nervous system is divided into two types: central nervous system, peripheral nervous system. In the CNS you have brain and spinal cord. In the peripheral nervous system you have somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system is what? So it is under voluntary control. आपके कंट्रोल में, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला तो रेज योर हैंड्स, आप फटक से आप हाथ खड़े कर दो. जैसे मैंने बोला है किक दैट फुटबॉल, तो आप इमीडिएटली किक मारोगे फुटबॉल को, बिकॉज इट इज अंडर योर वॉलंटरी कंट्रोल, राइट? सो वट एवर नर्वस सप्लाई इज देयर फॉर skeletal muscle, whatever nervous supply is there for skeletal muscle, so that comes under the somatic nervous system, right? Because you can control, it's under your will power, है ना? ये आपके विल पावर के अंडर है ना? So that's why voluntary in nature, है ना? But if I ask you to stop your heart for 2 minutes, अगर मैंने बोल दिया कि आपका हार्ट आपको स्टॉप करना है ना? वैसे तो आप बोलते हो कि मेरा दिल सिर्फ तेरे लिए धड़कता है, तो एक काम कर दे, 5 मिनट के लिए तेरा दिल मेरे लिए रुका दे, है ना? रोक सकते हो क्या आप? नहीं रोक सकते, बिकॉज योर हार्ट इज अंडर ऑटोनॉमस कंट्रोल. तो हार्ट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी. तो हार्ट beating is continuous after your birth. Soon after your birth your heart will start beating and it will beat until your death is there. आप जैसे इस दुनिया में आते हो, हार्ट आपका चालू हो जाता है बीट करना, और जब तक आप मरते नहीं हो तब तक आपका हार्ट बीट चालू रहता है. अगर स्टॉप हो गया मतलब आपका कार्यक्रम हो गया, आपका विकेट गिरे, राइट? सो यू कैन नॉट कंट्रोल योर हार्ट, ओके? यू कैन नॉट स्टार्ट, you cannot stop your heartbeat. It's not in your control, so it is known as a involuntary. It is a involuntary, so it has some autonomic control. It may be increased or decreased, but you cannot stop, you cannot start the heartbeat, you cannot control your peristalsis, है ना? सर आज मेरे फ्रेंड के साथ में झगड़ा हुआ है, स्पेशल फ्रेंड, तो एक काम कर ले, आज के दिन आपका GIT का सभी मूवमेंट्स बंद कर दे. कैन यू कंट्रोल? नो, you cannot control the movement of GIT muscles, you cannot control the peristalsis, right? So that is not under your voluntary control, it is under involuntary control.
So in the peripheral nervous system you have two parts, somatic nervous system, let's say for example skeletal muscles, right? So you can control the skeletal muscle, you can control the speech, so right, so it is also one of the skeletal muscle, right? Autonomic nervous system has some sort of autonomy, and for example respiration, for example your heart rate, for example your GIT peristalsis, for example release of your endocrine hormones, so glands, so that is under autonomic control. Peripheral nervous system, two parts are there, somatic segment and autonomic segment. In the autonomic segment again you have two parts. First part is known as sympathetic division and second part is the parasympathetic division. देखो CNS में आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, PNS में आता है, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. In that you have somatic nervous system which is under voluntary control, you can control the movement, you can, है ना, मैंने जैसे बोल दिया आपको भागना 1 किलोमीटर, रनिंग करना है तो आप फटक से रनिंग करने के लिए जाओगे, because that is under voluntary control. But autonomic nervous system means what? That is not under voluntary control. In that also you have two parts, sympathetic nervous system which prepares you for either fight or flight. So है ना, sympathetic nervous system will prepare you for fight or flight. Parasympathetic nervous system will prepare you for energy consumption, energy conservation. So autonomic nervous system again divided into two parts, sympathetic and parasympathetic nerves, right? Now there are two terms. What do you mean by sensory nerve? What do you mean by motor nerve? यहाँ पे दो टाइप होता है. There are two terms. I am just explaining these things by using diagrams. That's it. Okay, theoretical part भी है इसमें. So there are two parts. First part is known as sensory nerve or afferent nerve or neuron. So you know, okay. Then second term is known as a motor neuron or efferent nerve. तो सबसे पहले what do you mean by sensory nerve? So mostly it communicate with your external environment. आपके बॉडी के बाहर में जो चेंजेस हो रहे हैं that is recognized by sensory neuron or efferent neuron. The structure and functional unit of your nervous system is a neuron. Neuron क्या है आपका? Structural and functional unit of nervous system. Neuron क्या है? Neuron है ना. Neuron is a structural and functional unit of your nervous system. सभी जो चीजें nervous system में होते हैं via neuron होते हैं. Neuron are the structural and functional unit of your nervous system. So there are two type of neuron. First is a sensory neuron, also known as afferent neuron. Second one is a motor neuron, also known as a efferent neuron. Now what is sensory neuron? So as the name indicates, इसके नाम में रखा sensory. ये क्या करते हैं? Sense gain करते हैं. They will gain the sense, है ना. So whatever touch receptor or whatever heat receptor, pressure receptors आपके skin के ऊपर होता है. In your skin you have nervous, है ना. There is a network of nerve ending. In your skin you have network of nerve ending which are sensitive for the heat, temperature, pressure, right? So these nerve endings, they will recognize the sensation, है ना. Sensory receptor of two type, जैसे ना, they will receive the sense from external environment. बॉडी के बाहर का एनवायरमेंट का सेंस यहाँ पे गेन करेंगे. दे विल कैरी दिस सेंसेशन टू योर ब्रेन, राइट. तो दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द ब्रेन, outside the body to the brain. That's why they are known as afferent neuron, and they are sensitive for temperature change or pressure change, right? And that's why, है ना, जैसे आपका टेस्ट बड है, in the mouth also you have taste bud, so they are sensitive for taste. In your nose you have, है ना, you have nerves which are sensitive for a smell. To touch, smell,
whatever these are this touch, smell, hearing, taste, touch, so all these things, so whatever sense you are going to get, that is carried to your brain, and that nerve is known as a sensory nerve or sensory neuron, and also known as a afferent neuron. ये न्यूरॉन क्या है कि इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजते हैं, दैट्स व्हाई afferent neuron, और इनको बोलते हैं सेंसरी और afferent neuron, right? Sensory division. In the peripheral nervous system, the nerves are there, है ना, sacral nerve in the peripheral nervous system, cranial nerves are there, sacral nerves are there. Now these nerves, nerve क्या है, nerve is nothing but the is a bundle of your neurons, bundle of your neuron. Sensory division होता है इसमें. Sensory receptor are example, for example, write your sight in the eyes. In the eyes you have sensory receptor for sight or light. Hearing in the ears, in the nose you have smell, in the mouth you have taste, touch, right? So these sensory receptor will carry information from outside to the brain, outside to the brain. That's why afferent neuron. ये तो है external environment, for example in the external environment. From the internal environment, like for example, if any change in the blood pH, that will be recognized by chemoreceptor. Blood में pH change हुआ है तो chemoreceptor activate होता है. They are the sensitive receptor for the pH change in the blood. जैसे baroreceptor, they are present in the aorta of your blood vessel, and aorta जो होता है हार्ट का, उसमें ये baroreceptor होते हैं. They are sensitive for the pressure change. Osmoreceptor, osmoreceptor. So they are present in the internal environment. So they again carry the information to the brain. So any changes, so that is recognized that sense is carried to a brain. Brain क्या है, brain and spinal cord will process that information. Brain में spinal cord में क्या होगा, वो जो information input हुआ है आपका, उसमें process होगा, और process होने के बाद में क्या होगा, उसका action. So brain and spinal cord, okay. So peripheral nervous system will carry information towards the brain. Brain will analyze it, and then again via peripheral nervous system, brain will signal to a organs. Brain will signal to a organ. So whatever inputs are there from the afferent neuron, that will be processed by the brain, and then action, plan of action will be decided by the brain, and then brain will signal via peripheral nervous system to the effector organs. For example, muscle. For example, क्या है, muscle. So the neurons or the nerves which carry information from the brain to the effector tissue. ये क्या है, effector tissue. Effector tissue or effector organ. So the nerves which carries information from brain to the effector tissue known as a motor neuron or efferent neuron. क्योंकि ये information पास कर रहा है ना, नीचे ला रहा है, ये information कहाँ ला रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, मतलब ब्रेन के ना. तो afferent nerve, efferent nerve, और afferent neuron, efferent neuron, right? So suppose जैसे आपने कोई टाइगर देख लिया, if you see the tiger, है ना, टाइगर देख लिया आपने, वो साइट है, क्या है, साइट. दैट साइट इज टाइगर देख लिया आपने, वो मैसेज ब्रेन को जाएगा, ब्रेन रिकॉग्नाइज करेगा टाइगर है, आपको यहाँ पे भागना पड़ेगा, राइट. तो ब्रेन विल रिकॉग्नाइज दैट सिग्नल ऑफ ना साइट ऑफ टाइगर. ब्रेन विल सिग्नल टू योर मसल्स, मसल को सिग्नल करेगा फटाफट आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाओ और यहाँ से भागो, वाया इफ्रंट नर्व, वाया इफ्रंट नर्व. सो इफ्रंट न्यूरॉन, तो इफ्रंट न्यूरॉन है ना. तो इफेक्टर ऑर्गन्स क्या रहेंगे फिर आपके. सो इट में भी इधर सोमैटिक, सोमैटिक मतलब क्या है, वॉलंटरी. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल इज अ सोमैटिक और वॉलंटरी ऑर्गन, राइट. देन और द एक्शंस में भी इनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी मीन्स एटोनॉमिक नर्वस, एटोनॉमिक और इनवॉलंटरी. जैसे कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आप टाइगर देखते हो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, तो आपको बोलना पड़ता है कि हार्ट को, है ना, कि मैंने अभी टाइगर देखा है,
हार्ट को आप बोलते हो क्या, नहीं अभी टाइगर देखा तो हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, तो बढ़ा हो हार्ट रेट, नहीं, ऑटोमेटिकली होगा, बिकॉज इट इज ऑटोनॉमिक, अंडर ऑटोनॉमिक कंट्रोल, राइट. So effector system, again brain will recognize the signal via efferent nerve, via afferent nerve. Brain will process that signal, brain will process that information, and brain will give, brain will brain will release, or brain will, and brain will line of action will be transmitted from brain to the effector organ via motor neurons known as the efferent neuron. Now it may be of two type, either somatic, which is under your voluntary control, or either autonomic, which is not under your voluntary control. जैसे है ना, तो जैसे cardiac muscle, smooth muscle, glands, है ना, so they are not under your control, so that's why they are known as a autonomic nerve fibers, right. They are of two type, sympathetic division is there and parasympathetic division is there. Parasympathetic division, right. We'll see it one by one, don't worry. यहाँ पे आपको समझना क्या है कि your nervous system has a two parts, central nervous system and peripheral nervous system. In the central nervous system there is a brain and spinal cord. In the peripheral nervous system it is a different nerves. In the peripheral nervous system क्या होता है, different nerves. So nerves are of two type. Nerves or neurons. Neurons are of two type. There are two type of neuron: afferent neuron or sensory neuron, and then efferent neuron. Efferent neuron are of two type: somatic and autonomic. Autonomic nerves are of two types: sympathetic and parasympathetic. तो ये क्या है, डिवीजन है. Now central nervous system consists of brain and spinal cord. CNS में क्या होगा, brain and spinal cord. Central nervous system consists of brain and spinal cord, right? So peripheral nervous system consists of a 31 pair. Peripheral nervous system consists of a, peripheral nervous system में क्या है, peripheral nervous system consists of a 31 pairs of spinal nerve, then 8 pair of cervical nerve, then 12 pair of thoracic nerve, 5 lumbar nerve, 5 sacral nerve, and 1 coccygeal nerve. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, उसमें के 8 क्या है, 8 नर्व्स आर सर्वाइकल रीजन से आते हैं, 12 आर थोरेसिक नर्व्स, 5 आर लंबार नर्व, 5 आर सैक्रल नर्व एंड 1 इज कॉक्सियल नर्व. 31 pairs of spinal nerve and 12 pairs of cranial nerve. So in the peripheral nerve system you have 31 pair of spinal nerve and 12 pair of cranial nerve. ये आपके cranium से आएंगे, मतलब खोपड़ी से. That originates from brain and autonomic nervous system. These three are the considered as a peripheral nervous system. In the CNS you have brain and spinal cord. In the PNS you have 31 pair of spinal nerve, 12 pair of cranial nerve. Okay. Now what is neuron? Neuron क्या है? Neuron is a structural and functional unit of your nervous system. Neuron क्या है? Neuron is a structural and functional unit of your nervous system. Neuron is a structural and functional unit of your nervous system. तो न्यूरॉन का क्या है? न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. यू हैव 3 parts in the neuron. Structure of neuron will have 3 parts. First one is known as the cell body, second one is known as the axon, and third one is known as the dendrites. There are 3 parts of neuron. न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं: सेल बॉडी, axon and dendrites. So neurons is also known as a nerve cell. Neurons are also referred as a nerve cell, also called as a nerve cell. Okay. nerve cell cannot divide. Nerve cell cannot divide, and it is dependent on glucose for the energy. nerve cell cannot divide. नर्व सेल क्या है? डिवाइड नहीं होता है.
nerve cell cannot divide. It is based upon the energy. Okay, glucose is the only source of energy for the nerves. तो nerve cell क्या है, न्यूरॉन को ही अपन nerve cell बोलते हैं. Neurons are also known as nerve cell, and nerve cannot be divide and redivide. Okay, it is dependent on the glucose for the energy. So dependent on the glucose for the energy. Neuron is a structural and functional unit of your nervous system. It has a three part. First part है आपका cell body, second part है आपका axon, third part है आपका dendrites. Neurons are also called as nerve cell, and they cannot redivide. They are dependent on the glucose for the energy. They can synthesize the ATP. Nerve cell or neuron can synthesize the ATP. Okay, but from only glucose, not from fatty acids, not from your proteins. So unlike your muscles, जैसे मसल में क्या है, मसल सेल can oxidize lipids for the energy. Muscle cell can metabolize proteins for the energy, but neurons, RBCs, they are totally dependent on glucose for the energy. Okay, so what is the neuron? Structural and functional unit of your nervous system. It has a three-part cell body, axon and dendrites. I will show the structure. Neurons are also known as a nerve cell, and they cannot be divided or multiplied. Okay, and they are totally dependent on the glucose for energy. Now cell body is made from a gray matter. Okay, cell body made up the gray matter, and axon and dendrites make the white matter. मतलब so collection of cell bodies of neuron, so collection of cell bodies of neuron, they will form a gray matter in the CNS. Now, collection of cell bodies, they will get a gray matter. You will get a gray matter. The collection of axons and dendrites, you will get a white matter. The collection of dendrites and axon, white matter मिलेगा. तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, what is gray matter, what is white matter? So axons of peripheral nerves are covered or wrapped with a Schwann cell. In between the layers of Schwann cell, there is a fatty substance known as a myelin. देखो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है आपका न्यूरॉन. न्यूरॉन्स हैज अ थ्री पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, है ना. नाउ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन अगर साथ में आते हैं तो जहाँ पे सेल बॉडी का कलेक्शन है उसको बोलेंगे ग्रे मैटर, जहाँ पे एक्सॉन डेंड्राइट का कलेक्शन है उसको बोलेंगे व्हाइट मैटर. सो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, they will comprise a gray matter. Collection of dendrites and axons will give you white matter. Now axons of peripheral nerves, जो peripheral nerves है, now ये जो neurons है, neurons may be, है ना, neurons may be up to few millimeter, up to a few centimeters also. So in the peripheral nervous system, the neurons are up to 13 centimeters long. Right? The axon part of your neuron may be around 13 centimeters long in the PNS. In the CNS, it is short. Okay? Axons of peripheral nerves are covered with the or wrapped with the Schwann cell. तो axon part होता है, that is a wrapped with the Schwann cell. पहले मैं आपको न्यूरॉन दिखाता हूँ, बाद में आपको ये समझ. So this one is known as a neuron. This is a neuron of your ना structure of neuron, है ना, structure of neuron. So neuron has a three parts. मैंने बोला है आपको neuron has a three parts. So this part, this yellow part is known as a cell body. This is a cell body. ये क्या है? For cell body. In the cell body you have nucleus, and these this extension of your cell body is known as the dendrites. Extension of cell body is known as the dendrites, right? Then this shaft is known as the axon. ये जो पूरा है इसको axon बोलने का. This is the axon. This one is the axon. Okay, this is the axon.
and these are known as the terminal buttons or dendrites. Terminal buttons or cell body, dendrites and axon. Neuron has a three part: cell body, axon and dendrites, and terminal button. The terminal button are synaptic knobs. They are known as synaptic knobs. They are the extension of your dendrites only. See यहाँ पे ना. So there are two types of neuron. Myelinated neuron होता है, एक non-myelinated neuron होता है. Basically, neuron is the structural and functional unit of your nervous system. It has a three part: okay, cell body, then dendrites, and then axon. This yellow part. Now axons of peripheral nerves, they are wrapped in the layers made from a Schwann cell. जो axon is wrapped in the neurolemma is made from your Schwann cell. यहाँ पे है ना, देखो है ना, they are wrapped in the Schwann cell. मतलब there are different layers. जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, axon. The outer covering on the axon is known as the axolemma. And after that there is a myelin sheath. Myelin sheath is a fatty layer to prevent the to create the insulation. After that there is a myolemma layer of Schwann cell. And outer is known as a outermost cover is known as a neurolemma. There are two type of neurons. Myelinated neuron मतलब यहाँ पे myelin sheath रहेगा, and unmyelinated neuron मतलब myelin sheath नहीं रहेगा. So myelinated neuron conduct the impulse faster than non-myelinated neuron. So myelinated neuron जो होता है, that will conduct a impulse faster than non-myelinated neuron, है ना, as compared to non-myelinated neuron. So neurons are nothing but the structural and functional unit of your nervous system. Cell body, axon and dendrites are the part of your neuron. Then neurons or nerve cell rely on glucose for energy. They will produce ATP from glucose only. They cannot produce ATP from your lipids and proteins. Cell bodies, collection of cell body are known as a gray matter. The collection of dendrites and axon are known as a white matter. Axons of peripheral nervous system. Axons of peripheral nerves, they are covered or wrapped with the Schwann cell, layers of Schwann cell. In between the layers of this Schwann cell, there is a fatty substance known as a myelin. And those neurons which are having myelin known as a myelinated neuron, and those neurons which are not having myelin known as a non-myelinated neuron. So myelinated neuron will conduct impulse faster than the non-myelinated neuron. Remember. And there is one disease also. If there is a inflammation of nerve and if there is a removal of this myelin sheath, अगर ये myelin sheath remove हो गया nerve का, known as a multiple sclerosis. So removal of myelin sheath because of the infection or because of the trauma to the nerves known as a multiple sclerosis. Now nerve impulse, myelin, okay, as I told you, neurons are the structural and functional unit of your nervous system. So what is the role of neurons? Neurons का role क्या होगा? They are the excitable tissue. The role of neuron is nothing but the to generate the impulse and to transmit the impulse. To generate the impulse and to transmit the impulse. मान लीजिए आप क्या है, nerve cell. It is a nervous cell. So, you know, nerve impulse is generated by changing the resting membrane potential. Now, resting membrane potential of this nerve cell is a 20 millivolt. Resting membrane potential क्या है इसका? 20 millivolt. मतलब 20 millivolt क्या है? Resting membrane potential है ना? क्यों है? Because intracellularly क्या है? Intracellular.
potassium. Potassium is present inside the cell. So potassium is known as an intracellular cation. पोटेशियम के बोलते हैं अपन, पोटेशियम को बोलते हैं इंट्रासेलुलर कैटायन. एंड है ना, एंड सोडियम जो होता है वो आउटसाइड द सेल होता है, दैट्स व्हाई सोडियम इज नोन एज अ एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन. तो देखो नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होता है, नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसमिट होता है. आई होप आई एम ऑडिबल टू यू. आई विल एक्सप्लेन ओवर हियर. तो मान लीजिए ये क्या है, नर्व सेल है. So inside the cell there is a -20 millivolt, -20 millivolt है ना. ये क्या है, आउटसाइड द सेल. ये आउटसाइड द और इनसाइड द, ठीक है. सेल के अंदर, सेल के बाहर. सो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, 20 मिलीवोल्ट. क्यों, है ना. देयर आर सम कैटायंस, है ना, जैसे पोटेशियम, पोटेशियम होता है, पोटेशियम इज नोन एज इंट्रासेलुलर कैटायन. पोटेशियम सेल के अंदर होता है. एंड सोडियम क्या होता है, सोडियम इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन. सोडियम इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन. ना, सोडियम इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन एंड पोटेशियम इज नोन एज इंटरसेलुलर कैटायन. नाउ क्लोराइड इज नोन एज इंटरसेलुलर एनायन, ठीक है. बाकी आउटसाइड द सेल मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या रहेगा, सोडियम रहेगा, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड वगैरह सब, है ना. नाउ व्हाट हैपन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व इज 20 मिलीवोल्ट. 20 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है. और सेल मेम्ब्रेन, ऑन द सेल मेम्ब्रेन यू हैव सम आयन चैनल्स. ऑन द सेल मेम्ब्रेन यू हैव सम आयन चैनल्स. ये क्या है, आयन चैनल है. सो देयर इज अ कंटिन्यूअस लीकेज ऑफ पोटेशियम आउटसाइड सेल, ना. कंटिन्यूअस लीकेज ऑफ पोटेशियम आउटसाइड द सेल. सेल के अंदर का पोटेशियम बाहर आने आता रहता है, ठीक है ना. टू मेंटेन द इंट्रासेलुलर नेगेटिविटी 20 मिलीवोल्ट, ठीक है. मतलब इनसाइड द सेल क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है. इनसाइड द सेल देयर इज नेगेटिव पोटेंशियल, आउटसाइड द सेल देयर इज अ पॉजिटिव, है ना. आउटसाइड द सेल देयर इज अ पॉजिटिव, इनसाइड द सेल देयर इज नेगेटिव. इनसाइड सेल देयर इज नेगेटिव. नाउ if sodium goes inside the cell, सोडियम अंदर जाता है तो व्हाट विल हैपन, इनसाइड सेल पोटेंशियल, है ना. अगर सेल के अंदर सोडियम जाता है तो सेल के पोटेंशियल क्या है, सेल का पोटेंशियल 20 मिलीवोल्ट है. अगर सोडियम क्या है, सोडियम इज कैटायन, सोडियम अंदर जाता है तो क्या होगा, इनसाइड सेल पोटेंशियल विल बी डिस्टर्ब्ड, क्योंकि अंदर का पोटेंशियल कितना है, -20 मिलीवोल्ट, मतलब नेगेटिव साइड में. बाहर क्या है, सोडियम है. इफ सोडियम गोज इनसाइड द सेल व्हाट विल हैपन, there is a change in the potential of your cell. So resting membrane potential of cell will be disturbed, and that is known as a depolarization. That is known as a depolarization, है ना. जैसे ही सोडियम अंदर जाता है, पोटेशियम भी बाहर आने के लिए ट्राई करता है, ठीक है, टू मेंटेन द your membrane potential. So when cations go inside the cell, cation सेल के अंदर जाता है, that causes the depolarization. That causes the depolarization. सेल है, सेल के अंदर अगर सोडियम गया, that causes the depolarization, known as a depolarization result in the stimulation or generation of impulse. अगर depolarization होगा तो stimulation होगा, या फिर impulse तैयार होगा, या फिर impulse conduct होगा. So depolarization results because of the entry of sodium inside the cell, which disturb the inside potential, that is a -20 millivolt, right. तो -20 मिलीवोल्ट पोटेंशियल है इनसाइड का, है ना. वहां पे अगर सोडियम कैटायन गया तो वहां का पोटेंशियल डिस्टर्ब करता है. दैट इज नोन एज द डीपोलराइजेशन, एंड दैट डीपोलराइजेशन इज अ रिजल्टिंग इनटू स्टिमुलेशन और जनरेशन ऑफ इंपल्स और ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स. अभी मान लीजिए क्लोराइड अंदर गया, क्लोराइड. तो क्लोराइड क्या है, क्लोराइड इज नथिंग बट द एनायन. क्लोराइड क्या होता है, एनायन होता है ना. सोडियम अंदर गया तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा. क्लोराइड अंदर गया, Cl- अंदर गया सेल के अंदर, क्या होगा, सेल के अंदर का पोटेंशियल कितना है, -20 मिलीवोल्ट. क्लोराइड क्या है, एनायन. तो एनायन अंदर गया तो और भी माइनस में जाएगा ना ये पोटेंशियल. सो इफ एनायन विल गो इनसाइड द सेल, दिस
inside negative potential will become a more negative, and that is known as a hyperpolarization. That is known as a hyperpolarization. Depolarization मतलब क्या? When cation from outside the cell like sodium, calcium will go inside the cell, it will disturb the intracellular negativity, and that is known as a depolarization. Depolarization that result in the stimulation or generation of impulse or conduction of impulse. So if chloride goes inside the cell, क्लोराइड गया तो हाइपरपोलराइजेशन करेगा. तो क्लोराइड गया क्या होगा? हाइपरपोलराइजेशन. मोर नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा सेल के अंदर, एंड हाइपरपोलराइजेशन रिजल्ट इन द इनहिबिशन और नॉन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स और स्टॉपेज ऑफ इम्पल्स. मतलब सोडियम गया, सोडियम इनसाइड द सेल गया, so known as a depolarization. Sodium goes inside the cell and causes the depolarization and generation of impulse or stimulation or conduction of impulse. ठीक है, conduction of impulse. And if chloride go inside the nerve cell, it causes hyperpolarization and inhibition of conduction of impulse or inhibition effect, right? So that is a depolarization and hyperpolarization. Now once एक आयन अंदर गया, सोडियम अंदर गया, डीपोलराइजेशन हो गया. सो अगर आफ्टर डीपोलराइजेशन योर सेल विल अगेन स्टार्ट टू मेंटेन द इनसाइड सेल पोटेंशियल. एक बार सोडियम अंदर गया, डीपोलराइजेशन हो गया, उसका मतलब सोडियम अंदर ही रहेगा ऐसा नहीं है. सो सोडियम बाहर फेंका जाएगा. सोडियम विल बी एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द सेल वाया सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज फॉर्म. सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज फॉर्म. तो यहाँ पे फिर से पोटेशियम को अंदर लेके जाएंगे, सोडियम को बाहर लेके जाएंगे टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर एक सोडियम अंदर जाता है, डीपोलराइज करता है सेल को, है ना, उसके बाद में क्या है कि वो सोडियम को बाहर हकालने के लिए ट्राई करेगा, सेल बाहर हकाल देगा, पोटेशियम को अंदर लेगा. ड्यूरिंग दैट पीरियड इफ एंट्री ऑफ नेक्स्ट आयन इज देयर, that will not cause depolarization. That is known as a rest and that is known as a refractory period. ठीक है. तो नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है ना? तो मान लीजिए कोई यहाँ से एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. ये क्या है? इट इज अ इनसाइड सेल. ये क्या है? इनसाइड द सेल. ये क्या है? आउटसाइड द सेल. outside है. Inside cell there is a negativity. Inside cell there is a negative potential. Outside the cell there is a positive potential. Outside there is a positive because outside में क्या होता है? सोडियम, कैल्शियम, है ना, ये कैटाइंस होते हैं. इनसाइड क्या होता है? सिर्फ पोटेशियम होता है, राइट? सो इनसाइड पोटेंशियल इज अ 20 मिलीवोल्ट. ओके. नाउ सपोज इफ सोडियम गोज इनसाइड, सोडियम अंदर गया तो सोडियम क्या है? कैटायन है. सोडियम के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है, Na प्लस. तो कैटायंस गोज इनसाइड, that will disturb the inside cell potential known as a depolarization, which results in the generation of nerve impulse or conduction of nerve impulse, है ना. मान लीजिए क्लोराइड अंदर गया. क्लोराइड क्या है? क्लोराइड इज अ नेगेटिव आयन, एनायन, है ना. क्लोराइड क्या होता है? नेगेटिव. तो ये क्लोराइड गोज इनसाइड, पहले ही नेगेटिव है, इनसाइड और ज्यादा नेगेटिव होगा, known as a hyperpolarization, which results in the inhibition of effect or stoppage of impulse or stop of conduction of impulse, right? ये याद रखना है. जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है, जैसे सोडियम अंदर गया, या फिर हाइपरपोलराइजेशन होता है, जैसे ही जो भी अंदर गया, so that ion is removed from the cell. जैसे सोडियम अंदर गया, डीपोलराइजेशन हो गया, इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, लेकिन वो सोडियम अंदर नहीं रहेगा. वो सोडियम को बाहर निकालने के लिए सेल के ऊपर आयन चैनल होते हैं, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज फॉर्म. पोटेशियम को अंदर लेके आएगा, सोडियम को बाहर लेके. जैसे ही सोडियम अंदर आया, सोडियम अंदर जाने के बाद में अंदर जो पोटेशियम था वो बाहर निकलता है ना. और बाद में स्लोली ये पोटेशियम अंदर जाता है और सोडियम को बाहर निकलता है.
That is known as a repolarization. So depolarization, hyperpolarization and repolarization. There are three terms. देखो यहाँ पे पहला है depolarization, दूसरा है hyperpolarization, तीसरा है repolarization. Depolarization means entry of cation outside, entry of cation from outside to the inside. सेल के अंदर अगर एंट्री हो गया सोडियम का तो डीपोलराइजेशन होगा, एंड दैट रिजल्ट इन द स्टिमुलेशन और जनरेशन ऑफ इम्पल्स और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. हाइपरपोलराइजेशन मतलब क्या? एंट्री ऑफ क्लोराइड और एनायन, entry of chloride or anion inside the cell, which causes the hyperpolarization, which causes the inhibitory effect or stopping of impulse conduction or prevention of generation of impulse. ठीक है, सोडियम क्या करता है? इम्पल्स स्टार्ट करता है. एंट्री ऑफ सोडियम विल कॉज इम्पल्स जनरेशन, है ना. एंट्री ऑफ क्लोराइड विल कॉज इम्पल्स सप्रेशन. रिपोलराइजेशन मतलब क्या? इनका जो भी एंट्री हुआ है सेल में, सेल के अंदर पोटेशियम रहता है ना, सो इनसाइड सेल पोटेंशियल इज -20 मिलीवोल्ट मेंटेन बाय पोटेशियम, राइट. तो सोडियम एंट्री हो गया तो उसको सोडियम को हकल के पोटेशियम को अंदर लाएगा. क्लोराइड का एंट्री हो गया, क्लोराइड को हकल के पोटेशियम आएगा. तो दैट प्रोसेस नोन एज रिपोलराइजेशन. रिपोलराइजेशन मतलब क्या? सो फाइनल रिकंस्टिट्यूशन ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट. दैट इज अ रिपोलराइजेशन, है ना. एंड एक साइकिल हो गया. सो ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ सोडियम और क्लोराइड, जैसे एक सोडियम या फिर कोई भी क्लोराइड आयन का एंट्री सेल के अंदर होता है, डीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन जो भी होता है, उसके बीच में और एक आयन नहीं जाएगा और एक डीपोलर. सो इन बिटवीन द वन साइकिल ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दिस all process is known as the action potential generation. So during the process of action potential generation, another ion will not excite the cell. Now this period is known as the refractory period. ये कंसेप्ट आपको फिर से when we will see drug acting on cardiovascular system, वहाँ पे भी ये कंसेप्ट आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है. तो depolarization is because of the entry of sodium inside the cell, which causes the stimulation or generation of impulse. Okay. Hyperpolarization is because of the entry of negative ions like a chloride ion inside the cell, so that causes the inhibition. Okay. Now nerves are involved in the senses like touch, temperature, sight and hearing. So they are known as the sensory nerves, and nerves which are supplemented to a muscle results in the contraction or relaxation, they are known as the motor nerves. Somatic nerves means they are under voluntary control. Somatic nerves are also known as the voluntary nerves. Okay. And autonomic nerves means they are not under voluntary control, जैसे cardiac muscle and smooth muscles of your GIT, है ना. मेरा दिल सिर्फ तेरे लिए धड़कता है. कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरा दिल सिर्फ तेरे लिए धड़कता है, तो 2-15 मिनट बंद कर दे. कर सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज इनवॉलंटरी. यू कैन नॉट स्टॉप योर हार्ट बीट, यू कैन नॉट स्टॉप योर पेरिस्टालसिस, ओके, यू कैन नॉट स्टॉप योर renal पेरिस्टालसिस. इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल, इट्स नॉट अंडर योर विल. So it is having some sort of autonomy, and that's why it is known as the autonomic nerves. Yeah. So involved in the cardiac and smooth muscle, right? So I have told you the parts of your neuron. So neuron has 3 parts: cell body, dendroid and axons. Cell body, dendroid and axons. This is known as cell body. In the cell body you have one nucleus, and these projections or this outward extension of your cell body is known as the dendrites, and collection of cell body in the nervous system is known as the gray matter. Collection of axon is known as the white matter. Now axons are wrapped, axons are covered, axons are embedded in the multi-layer tissue known as the neuralgia, made from a neurolema. It is known as a nerve tissue made from a Schwann cell. Schwann cell का है ना टिश्यू बन के कवरिंग बनेगा एक्सॉन के ऊपर, known as a neurolema, right? And in the some type of neuron there is a in between the layers of Schwann cell there is a fatty
लेयर नोन एज अ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। तो ये है आपका एक्सॉन, ये क्या है आपका एक्सॉन, दिस इज नोन एज एक्सॉन। तो आउटर कवरिंग ऑन एक्सॉन इज नोन एज अ एक्सोलेमा, है ना। बाद में देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ फैट known as a myelin sheath. After that, there is a covering of Schwann, and there is a covering of neurolema, different wrapping of your Schwann cells. In the some nerves, this myelin, this neurolema is not continuous. In the some neurons, neurolema is not continuous. It is absent at some points. There is a discontinuous neurolema known as a, these nodes are known as a nodes of Renwire. This helps in the faster conduction of impulse, है ना। तो जो myelinated neuron है, myelinated neuron they conduct nerve impulse faster than non-myelinated neuron, है ना। Sometimes due to the inflammation, due to the damage to the neurons, this myelin sheath is removed, known as a multiple sclerosis. जब माइलिन शीथ रिमूव होता है तो उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। न्यूरॉन्स आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे यूनिपोलर न्यूरॉन मीन्स बट दे विल हैव वन सेल बॉडी ओनली। यूनिपोलर न्यूरॉन, सेल बॉडी इज बिटवीन द, है ना। there are two dendrites, with two dendrites and two axons and one cell body, known as unipolar neuron. Bipolar neuron, so you have two poles around the cell body, यहाँ पे देखो दो poles, and multipolar neuron, there are different poles of dendrites around the cell body of neuron. So most of the neurons, they are a multipolar neuron, types of neuron. Neurons or nerve cell are the working units of nervous system, and they are supported by another tissue known as a neuralgia. Supporting tissue to the nerve, to the neurons को supporting tissue क्या है, neuralgia. Gray matter of nervous system, gray matter मतलब क्या है, collection of cell bodies, है ना, collection of cell bodies. Cell bodies are found in the, है ना, collection of cell body is known as a gray matter. Collection of cell bodies part of your neuron. Cell body जो है neuron का, उसका collection क्या है, gray matter. Now cell bodies are found in the periphery of brain and central part of your spinal cord. Cell bodies जो होते हैं brain में क्या है, periphery में होते हैं और spinal cord में central में होते हैं. White matter मतलब क्या है, collection of dendrites and axons known as a white matter. Now axons and dendrites, the group of cell body is known as a nuclei in the central nervous. तो अगर collection of cell body है, nervous system में है, CNS में है, so it is known as a nuclei. Collection of cell body, ना, group of cell body in the CNS is known as nuclei, and it is known as a ganglia in the PNS. अगर वही cell body का group है peripheral nervous system में, तो that is known as a ganglia. So that's why in the, है ना, यहाँ पे एक exception भी है ना, there is one exception also, basal ganglia, है ना, brain में, है ना, servo nervous system. In the CNS, if there is a group of cell bodies, we call it as a nuclei. But in the CNS, there is a one there is a one area known as a basal ganglia, है ना। अगर सेल बॉडी का ग्रुप है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो अपन उसको न्यूक्लिया बोलते हैं, बट वहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कौन सा, बेसल गैंग्लिया, वो भी सीएनएस में होता है, दैट इज आल्सो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, बट उसको अपन बेसल गैंग्लिया बोलते हैं, नॉट अ न्यूक्लिया. एंड ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नोन एज अ गैंग्लिया. पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में क्या आता है, सेल बॉडी आता है containing a nucleus, only found in the CNS. Cell bodies are only found in the neurons containing, neurons present in the CNS. CNS के जो न्यूरॉन है उसमें सेल बॉडी आता है, which is a close proximity to the neuron, and it is protected by bones. Okay, cell body is not present in the limbs,
है ना. लिम्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें सेल बॉडी नहीं होता. व्हाई इन द neuron of cell body limbs there is no cell body? Because once there is a damage to the cell body the neuron cannot be regenerated. तो limbs में क्या है, आपके हाथ पैर का क्या है, टूटते ही रहते हैं, हाथ पैर में जख्म होते ही रहता है, हाथ पैर में डैमेज होते रहता है. दैट्स व्हाई सेल बॉडी is not present in the neurons of limbs. Dendrites are the extension that transmit impulse towards the cell body. Dendrite जो part है they transmit impulse towards the cell body. Axon का काम क्या है, axon will transmit impulse away from the cell body. Dendrite cell body and axons will carry and transmit the impulse. तो dendrites क्या करते हैं, dendrites will carry impulse toward the cell body, axon will transmit impulse away from the cell body. याद रखना है. In the peripheral nervous system there are okay, in the peripheral nervous system these three parts, that is cell body, dendrites and axon, they are wrapped, they are covered, they are enveloped in the particular type of cell known as Schwann cell, है ना. ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, जब आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में nerve cell will grow around the neurons and encloses them in several layers of Schwann cell membrane. These layers are known as a myelin sheath. इसमें कोई फैटी लेयर डिपॉजिट होता है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ. माइलिन शीथ इज मेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड्स एंड माइलिन विल एक्ट एज अ इंसुलेटर. माइलिन विल एक्ट एज इंसुलेटर. डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ रिजल्ट इन द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. is a nervous disorder, multiple sclerosis. There is a degeneration of myelin sheath. हाई गलत नहीं कहा. The gap between Schwann cells of neuron is known as a nodes of Ranvier, है ना. The gap between the Schwann cells of neuron, the gap between two Schwann cells of neuron is known as a nodes of Ranvier, है ना. Is known as a देखो जो न्यूरॉन में जो श्वान सेल के बीच में जो गैप होता है बिटवीन द टू श्वान सेल इन द सम न्यूरॉन देयर इज अ गैप नोन एज द nodes of Ranvier, nodes of Ranvier, which helps to conduct the impulse faster. They are the part of neuronal cell membrane which depolarizes during the nerve impulse. The neurolemma, that is nuclei and cytoplasm of Schwann cell, they are wrapped around the myelin sheath. Peripheral nerve can regenerate. अगर peripheral nerve का डैमेज हो गया है, peripheral nerve can regenerate partly. It can be corrected by using microsurgery. But अगर CNS में अगर कोई nerve डैमेज होता है, that cannot be corrected. So that's why जो ब्रेन में अगर कोई डैमेज है, ब्रेन में अगर कोई डैमेज है, जो ब्रेन का नर्वस सिस्टम है, ब्रेन में जो नर्व्स है उसमें कोई डैमेज हो चुका है because of the infection, because of the trauma, because of the genetic disease. Okay, so damage of nerves can result in the apoptosis or atrophy, है ना. नर्व अगर रिपेयर होता है तो, है ना, ठीक है, नहीं होता है तो एट्रोफी. सीनेस में नर्व रिपेयर नहीं होता है. इन द सीनेस देयर इज नो रिपेयर ऑफ नर्व. दैट्स व्हाई जो भी नर्वस डिसऑर्डर्स है वो परमानेंटली होते हैं. इन द पेरिफेरी यू कैन जनरेट द नर्व पार्टली. Schwann cell release the chemical which causes the regeneration of nerve tissue in the periphery only. Okay, so how there is a transmission of impulse across the two nerve or two neurons, है ना. The gap present between the two neuron, the gap present between the axons of one neuron and dendrites of or cell body of another neuron. The gap present between the gap present between the axon of one neuron and dendrites of another neuron known as a synapse. As a synapse. In the dendrites of neuron, आपको जो dendrites है न्यूरॉन के और आपको जो, है ना,
आपको जो टर्मिनल बटन्स है, इन दैट यू हैव chemical substance known as a neurotransmitter. तो we'll see tomorrow. अपन कल देखेंगे. मुझे थोड़ा ठीक नहीं है तबीयत, मेरा खांसी आ रहा है. we'll see tomorrow remaining part. अपन कल देखेंगे ये part.